So welcome everyone. I am Aaryan, and many of you are first time seeing me, and many of you have already interacting with me for a long time. So today we are here for just 2025. So it is very unfortunate that today we are here for just 2025 because exam should have already happened. But for some reasons, from last 3 to 4 years, we are seeing that JEST is not able to successfully conduct an exam. Right? Every year there is a delay, and mostly the delay is happening because they are trying to shift from offline mode to online mode. So they have done it many times. First they try to go from offline to online, then again online to back to offline, and last 2 3 years they are trying to go in online mode, which is difficult for them. But this gives us an opportunity. If our preparation was not there before and the exam is postponed, now we can prepare. The very first doubt in the preparation which comes, which I also faced, and I know that most of the students have this doubt: why jest? And somehow they are not able to prepare a mind about the jest, because jest takes you to a very horrifying career, horrifying career of PhD. And in India or in our society, when we talk about PhD, especially if you are not from a states like Bengal, Odisha, Kerala, and if you are from states like Punjab, Haryana, Rajasthan, UP, Madhya Pradesh, no one usually understands the concept of PhD. And mostly in most of the states in India, the concept of PhD is not understood very properly, even among the students, among the teachers, among the professors, among the physics professionals, and especially among the normal audience of the society. Right? So today I'm here to give you the concept of PhD first and then the concept of JEST. Right? Uh, JEST is particularly for integrated PhD or PhD. So if you are a BSc student, so first of all, JEST will give you one paper for everyone. So you are a BSc student, you are an MSc student, JEST does not care. JEST will give you one paper, you will have a computer screen, one paper, 50 questions, 50 sawal, 3 hours, 100 marks. Now, both the BSc and MSc student have to solve the same paper, and their rank list will be different. So there will be different list for integrated PhD, different list for PhD. PhD, you know, after MSc, you can do PhD. Integrated PhD, usually students don't know. So if you are in a BSc and you want to do MSc and PhD together, so you want somewhere where you do MSc and PhD together, so you go for integrated PhD. Many places offers that. I will talk about the places as such, but this is an option for you. Why people choose this? First, you get a stipend, you get a money in MSc also, which you do not get if you do MSc alone. So if you go to IIT and you just do the MSc, you don't get any money. You have to pay the fees. But if you do the integrated PhD, you get 10,000, 15,000. In cases like TIFR, you also get 22,000 per month. Right? So you get a good money, decent money you can live off, and then you get converted to PhD automatically. Basically, you don't have to give any other exam, and you are already in the top Indian institution. So basically, it saves you or 1 year also as well. So if you are an integrated PhD, it will save 1 year of your life. So that is the idea of integrated PhD, and other idea is PhD after MSc you do PhD. Clear? Okay. So why do we do PhD? Basically, but why should I choose this? So when we think about this, then we are in a very big trouble. Okay. So understand number one, that at the age of 21, 22, 23, 24, 25, whatever you are at, you should not have a clear idea why you want to do PhD. So that is a very good statement taught to me by one of the HODs of the departments in IISc. So you should not have a clear idea that why you want to do PhD. Number one, because if you try to answer every question, then basically you are anyway you are not a good explorer or you are not a good researcher, because without doing the experiment, without doing the actual research, without actually finding out about the things, you are trying to answer everything beforehand. Give me the clear roadmap. So yeah, this is I will do today PhD. Okay, 5 year PhD, then PhD ke baad ye. Okay, 32. I'm not married. So these kind of things are going in the head.
So 32 of year of age, I do not have a permanent job. I have a greeby at my home. I have a poverty. I have to fight for my parents. I have to uplift my society status. Everything you want to do, but at the same time, the PhD plan does not fit in, because that takes time. So you will be till 30 years of age. You will be doing either PhD and then postdoc, so many things, and this does not fit in. You want to get the things quickly as possible. You get a very good job at the age of 21, 22, 26, by maybe 26, and then that gives you respect in the society, that gives you money, everything fits in. But the problem is everything fits in at the age of 26, but nothing fits in at the age of 32. Okay, let's say you get a good job at the age of 26. So what is next? So let's say you get a job best in our position, situation, like BARC. So BARC is considered one of the best in our field. So let's say at the age of 24, 23, 22, 26, you get the job in BARC. Everything is now fitting in. You see, according to your plan, many things are getting into picture. Number one, you are getting a salary, good salary, permanent job. You will be easily able to get married. You will be set in your career. But what about when you are 31? You are still in the same job. No one knows your name. How many BRC scientists you actually know? How many times in your lifetime you have seen कि any BRC scientist have came to an interview on TV? There are many top people doing the very good things, and only those people come to an interview of BBC, or you must have seen Doordarshan interviews. There you see the top scientists coming in, only the top, only a fraction, or you can say 0.5%, because 99.5% of the people entered the job just for the stability, not for the research. So we are so focused at looking at the career at the age of 25, 26 कि 25 से 26 में मुझे क्या मिल जाएगा, आई वांट क्लैरिटी ऑन दैट. बट मेरे साथ लाइफ टाइम में क्या होगा, दैट आई डोंट वांट क्लैरिटी. On the other hand, PhD is a reversal. PhD says that, okay, I do not guarantee the experience that you will have between 20 to 30. You need to struggle, my friend. If you are having a family financial trouble, you will little bit struggle. If you have, but these days I will even tell you, I did not struggle because I had online source of incomes as well. And any PhD student these days can do online income sources as well along with their PhD, and they cannot struggle financially these days. I will even give you my experiences. Okay, but the problem is that PhD tells you कि 20 से 30 के बीच में give me the time, I do not guarantee you the life that you want. But after 30, let me give you a picture of what will happen. So let's say you have done the PhD from TIFR, good PhD, good publications. You go to a university in Queensland, Australia. You go to a university, Denmark, Germany, Israel, right? Then England. Then there are countries, top, all the topmost countries. You go for a postdoc. Many students of TIFR, if you go into and look at their profile, they are working. Some of them are working in a decent labs also, and some of them are working in the labs which have a professor who is Nobel Prize winner, who is associated with the professor who is Nobel Prize winner, who is associated with the person who is well known in the field of physics. So these are the things. So first you do a postdoc with them. Salary, good salary, $80,000 per year, $90,000 per year, $70,000 per year. Today's price, I'm telling you, at that time it will be something different. Right, you are getting an experience of a different country, you are getting an experience of a different nation, and you are basically pushing yourself as a researcher. And then you try to come back to India, and then you get a professorship at some place, as you become an assistant professor in some good university in India. Now what will happen? Now think about what will happen from the age of 32 to age of 60. Age of 22 to 32 is 10 years. Age of 32 to 60 is 28 years. 28 साल. You will have kids, your wife or you yourself will undergo pregnancy, you will have kids.
You will have your parents growing up as old citizens. You have to take care of them. Now you just imagine, if you are a professor at IIT, if you have ever seen a professors of IITs or some top places, but one thing that you must have observed is that they are their own boss. Number one, they are their own boss. They do not have to answer at what time they are coming to the lab, at what time they are going from the lab. They have to answer only in the board meeting 6 months later ki what you have done as a research in 6 months or in 2 months. That's all. No one asked them कि okay आज आप सुबह 9 बजे आए थे, okay attendance लगी थी नहीं लगी थी. No one asked IIT professor sir आपने सुबह 9 बजे आके attendance लगाया. These days they are trying to start this culture, but they are not able to start this culture because this is impossible to have. Every year they have 2 to 3 conferences going in a different cities. They are their own boss. They are handling the team. They are handling a lot of funds, and basically they have a very good work-life balance. Work-life balance in which life is also very important and work is also very important. In a work they are engaged in a top research. In a life they are their own boss. It does not mean that you do not work. You obviously work, but work-life balance basically means that you are your own boss. You don't have to answer to the people. In a job this will never be happening. You have to come to 9 a.m. You have to go at 5 p.m. What work you have done is less important. Especially in a government job, if you are thinking, it is less important in BARC that what you have done in 9 to 5. But it is important that you came at 9 and went out at 5. So till the age of 32, maybe other careers will appeal you. कि यार ये चीज I should prepare for IAS exam. I will be ये वो planet. So these things will appeal you. But trust me, the age from 32 to 60. So if you ask today any PhD student of IISc, they will be very sad person. He or she will be very sad. So this will happen once you enter into the second year of PhD and you ask the student of PhD कैसा है life. नहीं ये टेंशन बहुत है, बिल्कुल मत करो, जॉब कर लो. दे so many things. So you will be so scared कि ये तो he is in an IISc and he is not happy. And then you ask the same place the student who have just passed the PhD and going for something good, then they will be saying ha it is worth. And this is my personal experience. There was one person, Chandan bhaiya. So Chandan was my supervisor name also, but Chandan was our senior, one other person senior also. So Chandan in an IISc, so 5 years he took in PhD. And then on the 5th year, so what he was getting is Ramanujan faculty position in abroad, in England. So Ramanujan faculty position in England. His salary was very good just after PhD. So then he was like, oh, I am very happy. And then our other seniors was telling ki, okay, 2 years ago he was just telling ki, okay, PhD to sabse bekar decision. And now he is saying, oh, so 5 years of PhD is a struggle. So if you ask anyone in this 5 years ki PhD chal raha hai, so now tell me what about PhD? So everyone will say, okay, so they don't ask them because they are in a struggle. They are in a war. If you are asking a king inside a war, ki how is war, he will say, okay, it's a big struggle. But then once once he have won the kingdom, and then you ask ki Raja Sahab, was the battle worth it? Then yeah, battle was worth it. So if you are a kind of a person who wants to secure their life from the age of 30 to 60, then give an JEST exam. Go for PhD. If you are a kind of person who wants to secure their life of 20 to 30 and then you want to make a decision कि उसके बाद क्या करना है, then maybe don't go for JEST. ठीक है? So very clear idea. अगर आपको ऐसा है कि my most important life is 20 to 30. Afterwards I will decide कि मुझे फिर बाद में what I have to do. ठीक है? Then PhD is not a very good idea for you. You can do it for now until as your backup plan कि okay जब तक I do not get a proper idea कि what I have to do between 20 to 30, I will do PhD. So that is also many people doing as a backup plan कि I will join PhD first, and if I get something good other than that, I will go for it. Otherwise, I will continue PhD. Either you can do PhD with this intent, or you can do PhD कि नहीं यार till 30 years of age I am okay with struggle. But struggle does not mean that you are greed, your life work life balance is gone. ऐसा भी नहीं है.
Let me give you my personal experience of IISc. I was earning 1 lakh rupees per month. 30,000 I was getting from stipend. 70,000 I was getting from online sources. I was giving a daily 3 to 4 hours on online resources. So it was obviously, you can say, hectic work on my behalf. Second of all, work, basically the lifestyle. Fantastic food at IISc. I will even send you the menu. 4 days, 4 meals in a day, non-veg, veg. Perfect food you get, perfect rooms you get, single rooms you get, and then every cultural event is celebrated, so on. And you also get a respect, especially from the people of higher intellectual level. They do respect the people studying in the places like TIF or IISc. Don't expect the respect from your mama ji, phupa ji, taya ji. They will respect you later on. When you become a professor in IIT, then they will respect you. Then their own kids will come to you कि ओहो इसको अब IIT की तैयारी करवानी है, करवाइए, थोड़ा गाइड कीजिए. Then you are a person जिसके पास सभी एकेडमिक गाइडेंस के लिए आ रहे हैं. बट एट दिस एज दे विल टेल यू ओहो शादी नहीं करनी, क्या पढ़ता ही जाएगा, क्या पढ़ता ही. सो दिस थिंग्स विल हैपन. बट इफ यू आर डेडिकेटेड कि 30 से 60 की उम्र में तो दिस इज माई एरा, 30 years ऑफ माई लाइफ, आई एम गोइंग टू बी माई ओन बॉस. I am going to do the research of my own choice. I am basically more in the most important thing. I am my own boss in most of the things. Don't expect that there will be never an answers. Even professors have to answer to someone, but more or less, other than other comparative jobs, they are their own boss. Okay? They have their own lab. They have their own PhD students. Perfect thing, right? So within, and most of the pressure is in first 3 years. If you join as a new assistant professor, in first 3 years you will have some pressure कि नया lab set करना है, I have to get new PhD students, I have to get my first paper as a assistant professor. Afterwards it's a smooth ride. Smooth ride means your own choices. ठीक है? Because then you are established, people are giving you funds, your funds are secured, you have more than required funds, right? So ये आपको थोड़ा सा दिमाग में लेकर चलना पड़ेगा. एंड नॉट एवरीथिंग गेट्स यू फ्री. ये फ्री में तो मिलना नहीं. अगर यू आर सेइंग 30 years ऑफ लाइफ ऑन योर ओन बॉस, आपको कोई फ्री में आके हाथ में दे देगा तो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. देयर इज अ स्ट्रगल आल्सो बिहाइंड दैट, बिकॉज यू हैव टू बी केपेबल कि इफ यू आर योर ओन बॉस, you are able to deliver the results. That is what PhD is about. PhD teaches you when you are at your own, जब आप अपने, you are at your own, you are able to deliver results, you are able to work self motivation, खुद से, you are able to do that. Only then someone trust you and make you an assistant professor कि ठीक है सर, आप now from today IIT दिल्ली के अंदर क्वांटम टेक्नोलॉजी के रिसर्चर आप हैं. So you are a researcher. Anyone comes to our IIT, we will say क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर ये इंसान रिसर्च कर, इनसे पूछिए, he is an expert, she is an expert, इनसे पूछिए. ठीक है? तो ये जो अथॉरिटी है, दिस इज कॉस्टली, दिस इज एफर्ट्स टेकिंग. दैट इज व्हाई. एंड PhD. ठीक है? सो नाउ आई थिंक वी आर क्लियर ऑन PhD. एनी क्वेश्चन ऑन PhD, देन वी विल मूव टू JEST. आई थिंक फॉर PhD that is my analysis. Any question on PhD? Hello, sir. Then we will go. Yeah. Yeah. Sir, actually, I'm talking about. Ji, someone is asking something. Mention the online income sources while doing PhD. Yeah, yeah. Sir, So I was. Tell me. sir, can you please recommend how to also do some online jobs or Teach. at my Number own one is pace? number one is teach. So teaching these days, all setting up online courses is very easy. Okay, so number one is teach. Make a content. If you don't want to give the lectures, make a content. And the second is the places like these days you just search AI prompt engineer, physics prompt engineer. These are the new jobs which are in their market. So search physics AI prompt engineers. Okay? That is something also these days are working. I will even give you one website. So apply here. So go to LinkedIn and this is one website. Yeah. Okay. So, What do you please say? give the website or in your Yeah, app this is or this is a or website in the name I have Telegram written. channel.
This is a website name I have written, and all the jobs Okay. related to the same company, right? This is a starting point for your search, and then you can move on as per the recommendations given by LinkedIn and Naukri. Okay? But you can start from here. Okay. So yeah. So, And so also, now I yeah. am Mhm. so now I am at age of 23, and now I'm sixth semester in BSc. So there is, if I appear for BARC exam, they have the eligibility criteria for age 26 years. Now I'm confused that it is it 26 year X months. Oh, you can message me this. We will check in a chat. You can your eligibility. I also have to see the document. Ki up to which month they are allowed. Okay? This we will chat on a Telegram about that. Okay, Okay? sir. Okay. And there is another question, sir. Some the personal Mhm. life, the marriage or anything else in during PhD, and is this or the social See, life we live, social and life in IISc, okay, let me not filter it out. Let me give you the idea direct. So in IISc, what I've seen is two kind of people. Number one, group, Bengalis group, Odia group. So they move in a 6 to 7 people together. They are basically they are singles, but they are good in group. Second, couples. Okay. So most of the people are like that. So in PhD, you want someone's companionship, other person also wants your companionship, the things happens, and then most of the people who get married find their partner in during their PhD itself. Okay. So both of your PhD then manage. If you are able to manage good relationship, then you can get married after or during the PhD as well. I have seen many people getting married immediately after PhD, or even in the last year of PhD. Their supervisor also comes to their marriage. So marriage के लिए, so for a PhD student, marriage is not a very big thing. Okay, we are not a Nita Ambani's uh, son, right? We don't want 8,000 crores of marriage. yeah. We want to marry a person whose companionship we want for rest of the life, and you have a very good Yes, chance sir, of finding that. yes, yes. Yeah, tell me. No, sir. I'm not saying about the finding someone, right? And if we You already have someone, but someone who are not involved in physics, and see so that is that also. case, and I'm saying. I will always say that do not prioritize marriage. ठीक है. Marriage should be like कि okay, starting के कुछ phase of marriage, even if you are away from each other, that is fine. I mean, that is my personal experience, rest I don't know. ठीक है. So that for that you need to take an advice from basically someone who is married. ठीक है. So some postdoc maybe you can talk to, who are there. Even I have a very limited scope of information here, right? So if you have that, you have to work out. ठीक है. इसके बारे में we can talk in person, okay? ये because this is getting recorded, so we will talk in person. ठीक. Okay, sir. Okay, Uh, okay, fine, fine. yeah. Now someone is asking, is doing PhD worth or not? PhD doing is, as I said, is decision. You have to make it worth. ठीक है. So there is also a question कि assistant professors की job जो है आजकल नहीं आ रही है. There's a limited scope in that. See, obviously that is in there always ऐसा हमेशा रहता है कि in every kind of job कि you will have a limited scope. But I don't think so. You have done a PhD from TF or IISc or some other good place, either Pune, and then you have went in USA and have done a good postdoc, or you have gone to Germany, or you have gone to some other good country for a very good postdoc, and then you come back to India and you don't get assistant professorship within 1 year. You have to give 1 year. It's not like, yeah, you enter the airport and then there is a PhD, there is an assistant professor job open for you. You have to apply for 1 year. So you have to give an interview, research proposal. There is a big research proposal you have to give. Ki what kind of research you will be doing. Okay? And then top places hire you. Never apply at the bottom. If you are at that level person, never apply at the bottom level, because at the bottom level there is a bribery, there is a jaan pehchan. So local colleges में तो apply नहीं करना है. We want to aim at IITs, IISERs, TIFR, IISc. यहीं पे हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, बिकॉज दे वांट टैलेंट, दे डोंट वांट योर ब्राइब. ठीक है. सो इन IITs देयर इज अ वेरी लेस चांस दैट यू गिव ब्राइब एंड यू बिकम अ प्रोफेसर. ठीक है. देयर इज अ वेरी बिग चांस दैट इन योर लोकल कॉलेज whoever is becoming assistant professor is through money or some जान पहचान. ठीक. So yeah, that is the case.
No, there is no requirement for CSI net if you are in integrated PhD. ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है. लेट मी टेक द, ओके ठीक है, एक बार सेशन कंप्लीट कर लेते हैं, सो देन वी टेक ऑल द क्वेश्चंस. आई अंडरस्टैंड नाउ देयर आर क्वेश्चंस ऑफ अ डिफरेंट वैरायटी, so let me just complete in 10 minutes and then we will spend all the time for questions. You can put your questions. ठीक है, चलिए let's start. So now just 2025. Okay, so just 2025 क्यों देना है? So because it is a best exam for PhD. just मुझे लगता है कि PhD के लिए it is best because all the good places in India. So अगर आपको पीएचडी करनी है तो वन प्लेस आई अवॉइड इज आईआईटीज. ठीक है, आईआईटीज के अंदर सुपरवाइजर इज अ किंग, पीएचडी पर्सन इज अ लो ग्रेड पर्सन. दैट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस इन आईआईटीज. ठीक है, आईआईटीज के अंदर पीएचडी यू यूजुअली अवॉइड until unless it's a new IIT Hyderabad, Indore. At these places you can still think about. Old IITs like IIT Kharagpur, IIT Delhi, IIT Bombay, यहाँ पे PhD in basic sciences you avoid as much as possible. ठीक है, that is my personal idea. Avoid at these places. ठीक है. So what is a good places for PhD? All these places which are participating in the JEST are good. So if you are very interested in space, astrophysics, Aries is there, right? Then IIA, you see, the top two places I have told you about astrophysics, IIA and Aries, and then there is another one here, somewhere here. Yeah, see, Ayuka, and then you see NCRA TIFR. So the top four places in India for best of this best of the best, with is there giving you admission through the JEST. So astrophysics के लिए अगर if someone wants to go, you have an option. ठीक है, then you can think about quantum physics, you see, Boss Institute. Then there is another many places I will not point out. You can look at the list, but all the top places, Boss, HBNI, HRI, good, very good for theoretical research. ICTS, best for theoretical research, right? Then IISC, best in everything more or less. That is why it is in number one. Then many good ISERs, ISER Bhopal these days is getting very good. I mean, ISER Bhopal is one of the emerging institutes, especially in the experimental physics, and in the physics also they are merging themselves with economic studies. So they are merging themselves with economic studies also, and that is somehow is also good. Okay, then ISER Kolkata is okay, that is also fine. ISER Mohalli and ISER Berhampur, I am not that much good fan. ISER Pune, best place. ISER Trivandrampuram, very good life, good research, humble people, humble supervisors, very nice place. Okay, so think about it. ISER Tirupati, no, that is also the same idea. ISER Tirupati also is also good people, South Indian people, nice people, very nice. IIST, very good place. IMSC, best in theoretical physics, best, one of the best places. ठीक है, then these are the two places which are basically working like a CSIR labs, जैसा atmosphere CSIR labs में होता है, not like a university kind of environment but like a colleague kind of environment. You will be thinking, okay, I'm some sort of doing a job. PhD is like a job at these places, but a very solid research, very solid equipments that you have. So let me tell you, if you do a PhD in a local college, local university, or state university, DU, let's even take an example of DU. DU is one of the best. So DU is one of the best. But if you're doing PhD in DU, and if you go and ask the student of DU कि कैसे होता है research, so let me tell you their research analysis. First, they find the problem, which is already done. Then they do the research on that. Then they have to perform an experiment. So let's say NaCl पे experiment हुआ है, वो CaCl पे कर देंगे. ठीक है, ये होता है. तो अब CaCl पे एक्सपेरिमेंट करना है, तो CaCl पे इफ यू वांट टू डू एक्सपेरिमेंट, देयर विल बी 10 एक्सपेरिमेंट्स यू हैव टू परफॉर्म. XRD करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. XRD मशीन उनके पास होगी, एक आध मशीन और होगी, बाकी 8 मशीन्स दे डोंट हैव. ठीक है, DU, आई एम टॉकिंग अबाउट DU, दे डोंट हैव दैट रेस्ट ऑफ द 7-8 मशीन्स.
कुछ लैब्स में है भी, ऐसा भी नहीं कि नो वन हैज दैट वर्क. कुछ लैब्स में है भी मशीन्स. मोस्ट ऑफ द लैब्स हैव एटलीस्ट 3 to 4 machines missing. अब now what will do, they will put their samples, they will send an envelope to the places like IISc, TIFR, where they will do the experiment, send the report of the experiment, okay, this is what your sample is, and then email back, or you can say post back. And then this DU person is basically putting, and you can confirm that. Okay, if anyone is from DU, I'm not talking about every lab. There are some very exceptional, very few labs, but most of the labs are like this. You have to send an Yes, sir. experiment outside, right? Yeah. So, and then what is the experiment you have done? Nothing. It is not you are doing something. It is someone else. So now you see who is doing experiment in ICTS or in sorry IISc. We were doing the experiments. I was 3 months into my PhD and I was trained on the one of the best instrument that you have in India. Very expensive instrument, very delicate instrument, and I'm trained on it. And IISc is spending 50,000 rupees on my training so that I get trained on that. 3 months into the PhD, 2 months into the PhD, I was inside the most dedicated experimental lab. And I never had to send any experiment out. Every experiment I have to do myself. And at any time, I can go 12 a.m. in the morning, up to 3 a.m. in the morning, I can do the experiment. That is why the good institute and bad institute differs in, you can say, in PhD. The difference is very clear. And these differences become even clear when you are done with PhD. Then you will see, okay, हाँ, तो ये experiments का फायदा था. ठीक है? There is a benefit of this. Sometimes you become so good in that instrument itself, you get an industrial jobs. ठीक है? Industrial jobs also you get because you are trained on handling those instruments. ठीक है? So that is the benefit, and also your research moves fast. There is a fast movement. In the top places, if the research is not moving fast, there are only two reasons. Either your professor is so well established that he does not care anymore. That happens in the top places. The professor is so well established that he becomes so busy that he has no time for PhD management. Stay away from such professors. Okay. Second reason is that you get involved in such complicated research that it is taking time to get to the final results. That is also happening. Sometimes in the first year of your PhD, you select a project which is very difficult to execute, and then your experiment is failing again and again. That is still fine. If I think if you're in such research, and even if it takes one more year in PhD, at that time you will feel bad, but later on you will realize because you did so complicated work in PhD, your path for becoming assistant professor is clear. People are waiting for you to enter into this domain. Okay? But that is second part is okay, but first part is bad, so you should stay away from such professors. Other than that, in top institutions, research move at a decent pace. Okay? And your research is new. It is in the international journals. In IISc, no one will allow you to publish in a domestic, or you can say low standard journals. You have to at least apply in a very good journals. Okay? So that is a minimum criteria. So the average for you is a dream for many local college PhDs. So think that is the reasons. PhD के अंदर ये जो है थोड़ा difference. Struggle is there. I cannot say the struggle is not there. ठीक है? So all these places, TIFR, Raman Research Institute, excellent institute. ठीक है? PRL, I love this. PRL Ahmedabad, fantastic. ठीक है? Then these are the West Bengal based. ठीक है? West Bengal based, right? These TIFR you already know is there. ठीक है? Now comes कि करना क्या पड़ेगा? JEST के लिए what we have. ठीक है? तो why I am emphasis on JEST? So if you can even go here from net, CSIR net. So why JEST is only there? देखिए, if you give a CSIR net exam, 30-40,000 students give the exam. Minimum number 30-40,000 in physics people give this exam, and then the paper is very very monstrous. CSIR net, I don't know why they want to put so difficult questions. Why cannot they check the simple knowledge of a student? No one understands. But these days in part C they are putting so difficult questions. So question level is difficult. Even if you are prepared, anything can come. And then so many people are there in CSIR net. On the other hand, in JEST,
This is the last year data which is given by JEST itself. You see, total 6,800 people apply for PhD and only 5,000 people gave the exam. So your competition is only with 5,000. So 5,000 students ke saath you have a competition. So in India, having a competition with 5,000 people is not even considered competition. In India, until unless you don't have 2 lakh people giving an exam, you don't consider that as an exam. तो सिर्फ 5,000 लोग पेपर देने जाएंगे, तो कितना ही बड़ा competition you have? No, you don't have that. And is this year you can decrease the number even more. Why? Because the paper is delayed. Many people will not apply because they are already somewhere set. ठीक है? So more this year you can imagine this number will be even down 3,000. Okay. And integrated PhD, you see 4,200 people applied, only 3,200 people gave the exam. So what is the competition? 3,200 people are giving the exam in integrated PhD. That's all. Your competition, if you are a BSc student, is only with 3,200 people all over India. अब सबने तो पढ़ाई नहीं की है. Not everyone is done with the PYQs. Not everyone has prepared for JEST. तो उसके अंदर if you just study, so I think JEST का एक लौता criteria, you just study. जो उन्होंने PYQ पूछे हैं बस उसी को कंप्लीट इफ यू डू तो एग्जाम की प्रिपरेशन इज डन. इसके अंदर वो चैलेंज है ही नहीं कि यू हैव टू बीट द कंपटीशन. कोई कंपटीशन है ही नहीं, वेरी लिमिटेड कंपटीशन. अगर मैं बोल दूं कि 1 to 50 रैंक, तो ठीक है, फ्रॉम फॉर रैंक 1 to 50 देयर इज अ कंपटीशन. देयर इज नो कंपटीशन फ्रॉम 50 to 100, 100 and 150. आप थोड़ी सी पढ़ाई करके इसके बीच में आ सकते. ठीक है, so understand that. First 50, there are many people who are studying it for just for a long time, especially in the places like West Bengal, Odisha, and so on. So leave them out. And that you can even see from the top scores. So the topper got 74 marks, 72 marks. So these are the people who are preparing for a long time. Okay? So इनको छोड़ दिया जाए तो getting a rank under 150 is not a very difficult thing in JEST. अब cut off for PhD the cutoff was 36. For integrated PhD the cutoff was 30. And if you get 36 marks, you get 496 rank. You don't need 496. First of all, if you want to get into good place, you don't need 496 rank. You need a rank of 150. ठीक है, both 150 or less than 150. ठीक है, if it goes till 200, that is also fine. But somewhere between 150 to 200 should be the minimum rank you should target. 150 is the best. Now the question is, for 150 rank, what is the marks I need? So, and is it possible in 1 month to qualify JEST? So I will give you the last year's data. So last year also I had such case where we had started 1 month batch. So student enrolled in 1 month batch. So and they prepared for 1 month. Many people got the rank. This is my data. Many other would have also qualified. I don't know about them. But you see, simple. So you all India rank 58, 77, 78, 102, 107, 235, 249, 286, 4. So these are the people I could find out before the session. These qualified the exam in 1 month. They were associated. And you see, for all India rank 58, how much marks is there? 42. So 58 rank ke liye, all you need is 42 marks out of 100. Or 42 marks, if you look at the 2024 paper, 60 marks का पेपर तो रिपीटेड ही था, 50 marks का पेपर तो रिपीट था, 50-60 marks का पेपर वाज रिपीटेड पेपर. PYQ में ऑलरेडी वैसा क्वेश्चन पूछ चुके हैं. एंड आई कैन इवन गिव यू कि आइडिया कि सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, ये क्वांटम का पूछा हुआ है, ये पूछा. तो 50 से 60 मार्क्स का पेपर तो रिपीटेड था. तो अगर आप सिर्फ PYQ इफ यू वुड हैव डन इन द लास्ट ईयर, you would have got this rank. Now let me give you a personal experience. I don't exactly remember the marks, but so marks will be little bit off. But my personal experience is, 1 year I gave the JEST. I got, let's say, I don't exactly remember the marks. So let's say I got 37. And another year I gave the exam, I got 45. So there was a 8 marks difference. I still remember there was a 8 marks difference. When I got 37, so these are not the true numbers, I'm just taking an example. So I don't exactly remember that. I will look at my mark sheet. So 37 marks ke upar I got 87 rank, and 45 marks ke upar I got 132 rank. More marks, less rank. Less marks, more rank. Why?
This paper have happened during COVID, and the paper was so delayed, getting delayed. It almost happened in May end or June, and this paper happened on time in March, April. So here the competition was not there, almost not there. There was no competition because the paper was delayed till May, June. So only at getting very low marks, I got a very good rank. And that is what you are at a position of. There is no notification. Trust me, if the paper goes by the end of the May, अगर मई एंड तक अगर पेपर आपका चला जाता है तो कंपटीशन विल बी 30%. जो भी है आपका कंपटीशन 5,000 का 30% रह जाएगा. सो इट्स अ वेरी गुड टाइम टू हिट. आप बहुत कम मार्क्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाकर एट अ गुड प्लेस यू कैन एंटर. I remember at this year, all the interviews were online because COVID था. I gave 5 interviews, 3 selections. 5 interview, 3 selection I got online. TIFR Hyderabad, I think either Tirupati and one more either I don't remember. 5 में से 3 interviews I qualified, 2 interviews I failed. HRA का interview I failed and ICTS का interview I failed. Other than that, I qualified 3 out of 5 interviews. I had the 3 offers, but I was already in IIT Delhi, so I did not join. ठीक है, बिकॉज अभी फीस दे दिया है, देन गो है. सो आई डिड नॉट ज्वाइन. आई गुड फॉर मी, आई गॉट IISc इन माय PhD. आई शुड हैव नॉट ज्वाइंड. इज अ गुड डिसीजन फॉर मी. बट यू हैड टू अंडरस्टैंड नाउ. आप आइडिया समझ गए कि ये जो पेपर डिले हुआ है इसका फायदा आपको ही होगा. तो दिस इज योर बेनिफिट. और सेकेंड बेनिफिट इज कि अगर आपको अपना इंटीग्रेटेड PhD और PhD ज्वाइन करना है तो बेस्ट बेस्ट टाइम. ठीक है, अब थोड़ा सा इंटीग्रेटेड PhD और PhD के बारे में बात कर लेते हैं. जस्ट मनी, वेरी क्विकली, मनी वाइज. ठीक है, सो फाइनेंसिस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर मी ऑल्सो. फाइनेंसिस आर इंपॉर्टेंट. तो मनी के अंदर 2 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, व्हाट यू विल गेट एंड व्हाट यू विल स्पेंड. ठीक है, सो मनी के अंदर इफ यू आर एन इंटीग्रेटेड PhD, कम से कम 10,000. some places are offering 10,000, very few. Many places are offering 12,000. Many are offering 16,000 and places like TIFR are offering 22,000 plus. ठीक है, सो आपका स्टाइफन जो है पर मंथ इस रेंज में होगा, डिपेंडिंग अपॉन विच प्लेस यू गेट. ठीक है, सो Pondicherry University is not a JEST as affiliated. I'm talking about JEST affiliated only. So JEST affiliated universities में से 10,000 से लेकर 22,000 तक you can get. I think TIFR ने अब थोड़ा increase कर दिया है. I am not sure. Check it. Check once. Now in PhD it is fixed. It is 37,000. So wherever you join, you get 37. You don't have to qualify NET. No other exam you have to qualify. Just qualify JEST, give interview, get selected in interview. You will get 37,000 in PhD. No need to qualify any other exam. That is a main point. ठीक है, PMRF फेलोशिप जो होती है वो आपको एक बार जाने के बाद then you can apply if you are eligible. ठीक है, that is not a guaranteed, then you apply. ठीक है, वो लेटरल होता है, 1 साल के बाद you can apply. Perfect. So 37,000 is a fixed number. ये 37, तो इंटीग्रेटेड PhD स्टूडेंट में जब आप MSc कर लेंगे, MSc हो जाता है 18 मंथ्स में. सो 18 मंथ्स के बाद आप MSc से PhD में शिफ्ट हो जाएंगे और फिर आपको भी 37,000 यू विल स्टार्ट गेटिंग. ठीक है, तो 2 साल PhD करने के बाद यू गेट सीनियर रिसर्च फेलो. तो सीनियर का कितना है अभी? 41, 42. व्हाट इज देयर? एनीवन? अभी रिवाइज हुआ ना, कितना था SRF? 42. ओके, 42,000. Perfect. So you get this money. So you get this monthly money. What is the expenditure? So I think expenditure wise, if you see, 7,000 rupees on average, take it for 7,000 नहीं, 30,000 फीस होगा तो 3,000, 4,000, 3,000 to 4,000 per month. Think about fees, जो आपकी कॉलेज फीस जाएगी. मंथली नहीं जाएगी, वो एक साथ जाएगी, लेकिन एवरेज 3,000 to 4,000. ठीक है, उसके अलावा 18 another 2,000 to 3,000 per month rent, hostel rent, right? 7,000 to 8,000 और 6,000 to 8,000 mess. मेस इतनी एक्सपेंसिव क्यों है? बिकॉज खाना इज वेरी गुड. अगर मैं आपको मेन्यू भेजूं IISc का, यू विल से ओके, इतना अच्छा खाना घर पे भी नहीं खाया. परफेक्ट फूड. मतलब in my bill used to be 6,800, 7,000. 30 days I used to eat and best food. Morning में you are getting omelette, everything
इवनिंग में यू आर गेटिंग नॉन वेज. आई एम अ नॉन वेजिटेरियन. आई यूज टू गेट अ वेरी गुड नॉन वेज फूड चारों टाइम. इवनिंग स्नैक्स वाज आल्सो वेरी गुड. पानी पूरी सब कुछ आपको यू गेट. तो इफ यू आर अ फूडी यू विल एंजॉय. तो 6,000 से 8,000 मेस में मेन्यू आता है क्योंकि इट्स अ वेरी गुड फूड दे विल ऑफर यू. मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आई हैव सीन इवन इन आईआईटी दिल्ली दे वर गिविंग गुड फूड. सो सब जगह पे दे आर गुड. टॉप प्लेसेस गिव्स यू गुड फूड. तो ऐसा नहीं होता है कि आपको बेकार सा खाना मतलब मेस में दाल में पानी नहीं. ऐसा ऐसा नहीं रहेगा. तो इट्स नॉट लाइक अ लोकल हॉस्टल थिंग. तो खाना विल बी क्वालिटी. इट विल बी गुड तड़का वड़का. एवरीथिंग विल बी नाइस. ठीक है. सो लेकिन अगर आप इसको टोटल करेंगे तो यू विल गेट 3 6. सो मैंने कभी नहीं देखा कि समवन स्पेंडिंग मोर देन 15,000 पर मंथ. 15,000 से ऊपर पर्सनल एक्सपेंसेस भी इन्वॉल्व करके यू डू नॉट क्रॉस दैट. तो 15,000 रुपये आपका खर्च होगा मोर और लेस. ठीक है. तो यू कैन से रेस्ट ऑफ द मनी यू कैन सेव. अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी में है तो यू विल बी बेयरली एबल टू यू कैन से आप अपना खर्च निकाल पाएंगे. यू विल बी बेयरली एबल टू अफोर्ड योर सेल्फ. और पीएचडी के अंदर जाते ही आपके 15 से 20 हजार रुपए बचने शुरू हो जाए. यू विल बी एबल टू सेव 20,000 15,000 पर. ठीक है. उसमें से यू कैन सेंड. यस. नहीं यू डोंट हैव टू डू साइड हसल्स. स्टार्टिंग में यू कैन टेक मनी फ्रॉम होम. मतलब एमएससी में तो सबको घर से पैसा लेना ही पड़ता है. तो एंड अगर यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, अगर आप करना चाहते हैं कुछ और तो देयर आर मेनी ऑनलाइन थिंग्स दीस डेज अवेलेबल. आई ऑलवेज वाज इंटरेस्टेड. तो मेरा होता था कि यार साइड में कुछ ना कुछ रहना चाहिए. आई शुड आल्सो हैव सम अदर फाइनेंशियल थिंग्स. तो आई यूज्ड टू डू इट बट इट इज अप टू यू. सो इवन इफ यू डोंट डू इट पीएचडी के अंदर योर एक्सपेंसिस 15,000 योर इनकम इज 37,000. सो अगर आपको लैपटॉप वैपटॉप भी लेना पड़े कुछ ईएमआई भी है 7 8,000 का ईएमआई यू ऑल्सो हैव. तो तब भी आप अपने घर पे एटलीस्ट 10 से 15 हजार यू कैन सेंड एंड यू कैन इवन सेव. ठीक है. चलिए. अब इंटीग्रेटेड पीएचडी में इफ यू वांट एडमिशन योर बीएससी शुड बी डन. बीएससी के अंदर फिजिक्स होना चाहिए. सम मैथमेटिक्स कोर्सेज शुड बी देयर. और पीएचडी के अंदर यू शुड हैव योर एमएससी डिग्री डन. या तो आप फाइनल ईयर में हो या तो बीएससी फाइनल ईयर में हो और योर एमएससी फाइनल ईयर में हो. फाइनल ईयर में हो मींस कि इस साल 2025 में जून या जुलाई तक आपका जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए. यू शुड बी एबल टू कंप्लीट. ठीक है. तो अभी क्या होगा इस पेपर के लिए. इस पेपर के लिए यू विल हैव 50 क्वेश्चंस 50 क्वेश्चन. ठीक है. सीजीपीए डज नॉट मैटर इन इंटरव्यू. नो नॉट एट ऑल. सो यू विल हैव 50 क्वेश्चंस 3 hours 100 marks. स्टूडेंट्स कहाँ फेल होते हैं. वेयर डू स्टूडेंट्स फेल. लेट मी टेल यू. they have designed the paper in a very tricky way. So first 25 questions are 1 mark MCQ. तो हर क्वेश्चन की औकात है 1 मार्क. 1 मार्क का क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स. स्टूडेंट स्टार्ट द पेपर फ्रॉम हियर. जिसने यहाँ से पेपर स्टार्ट किया फेल. खुद को फेल ही समझो. यू हैव ऑलरेडी हिट योर सेल्फ वेरी बैडली. तो कभी भी यहाँ से पेपर स्टार्ट नहीं करते. फर्स्ट 25 यू सी 50 में से 25 क्वेश्चन out of 50 25 question and only 25% marks. So 50% questions are giving you 25% of marks and other 50% of the questions are giving you 75% of the marks. So always start the paper from NAT. If you see the NAT of last year, there were 10 questions. 6 were repeated from PYQ. Very easy question. Even मैंने क्लास के अंदर वी हैव डिस्कस दोस क्वेश्चंस. क्यों. बिकॉज आई एम अ जस्ट प्रोडिजी. नो. बिकॉज वो क्वेश्चंस स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं. दोस क्वेश्चंस आर बेसिक क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन गेट पार्ट बी ऑफ नेट जेस्ट. पीवाईक्यू में बहुत बार पूछे जा चुके हैं. कोई भी अगर बेसिक इंसान सिलेबस पढ़ाएगा तो वो क्वेश्चन करेगा ही. तो दैट इज व्हाई 6 out of 10 क्वेश्चंस वर रिपीटेड. अगर बहुत भी बुरा पेपर आया बहुत बुरा तो कोई भी स्टूडेंट जिसने डिसेंट प्रिपरेशन किया एनी स्टूडेंट हु हैव डन डिसेंट प्रिपरेशन कैन डू 4 out of 10 NAT. 4 का मतलब है सीधा 12 मार्क्स यू कैन ऐड. आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट टफ पेपर. ठीक है. देन यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चंस मिलेंगे एमसीक्यू विच आर 45 मार्क्स. बहुत भी डिसेंट पेपर आता है बहुत टफ पेपर आता है तब भी 5 क्वेश्चंस कर लेंगे आप. यू विल बी एबल टू डू 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 15. 3 में से एक क्वेश्चन. और इतने क्वेश्चन तो वो रिपीट करता है. जेस्ट इज अ वेल नोन फॉर रिपीटिंग द क्वेश्चंस.
रिपीट करेगा वो कोई। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, रिपीटेड क्वेश्चंस आर कमिंग। वही कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन, वही कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, वही यू कैन से क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स इन 3 dimensions, हाइड्रोजन मोटल एटम, रिपीटिंग सीधा। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन दिया, 15 मार्क्स, 27 हो गए आप। यहाँ पे 27 हो गए। और मेरी बात ये लेकर चलो, अभी ये दिस सेशन इज गेटिंग रिकॉर्डेड। अगर कट ऑफ 10 मार्क्स से नीचे नहीं गिरी ना इस बार, 7 to 10 मार्क्स नीचे नहीं आए तो बात करो, क्योंकि पेपर डिलेड है। आई नो दिस। कट ऑफ की बात नहीं करेंगे, टॉप रैंक की बात करें। जो मार्क्स पे 42 मार्क्स पे अगर आप देखें, इफ यू आर गेटिंग 42 मार्क्स पे 58 रैंक, तो दिस ईयर यू विल गेट 36 मार्क्स पे दिस रैंक। तो लेकर चलो इस बात। सो दिस ईयर एनीवे द मार्क्स आर गोइंग टू बी लेस। ठीक है, बट एनीवे। और अगर मैं देखो, इफ आई एनालिसिस 2024, 12 क्वेश्चंस वर वेरी वेरी सिंपल आउट ऑफ 20। मतलब 12 क्वेश्चंस तो आई थिंक किसी ने सिलेबस ढंग से पढ़ा है तो 12 क्वेश्चन तो मतलब 30 मिनट्स का काम था। 30 मिनट में 12 क्वेश्चन हो सकते। ठीक है, लगभग 40 मिनट। 42 पे तो अच्छे खासे साल के अंदर यू कैन सी इजी पेपर था। 2024 का पेपर वाज कंसीडर्ड इजी। इजी पेपर के अंदर अगर हम बात करें तो 40 मार्क्स के ऊपर 150 रैंक के अंदर यू आर गेटिंग। 40 मार्क्स से ऊपर तो चाहिए, और वो भी मैं पीएचडी की बात कर रहा हूँ। इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए तो यू कैन डिक्रीज इट, मतलब 35 मार्क्स पे ही काम हो जाएगा, 32 मार्क्स पे ही काम हो जाएगा। बिकॉज यू सी द डिफरेंस इन कट ऑफ, राइट? कट ऑफ डिफरेंस आप देख रहे हैं ना, पीएचडी का कट ऑफ 36 है, इंटीग्रेटेड पीएचडी का कट ऑफ 30, तो 5-6 मार्क्स उसका वैसे ही रिड्यूस रहता है। तो दिस इज आइडिया। पेपर हमेशा एनएटी से स्टार्ट करेंगे, कोशिश रहेगी 4 एनएटी किए जाए पेन मिनिमम। एमसीक्यू पे जाएंगे, 15 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन ढूंढ के करेंगे। अब 4 क्वेश्चन जिसने करने हैं, 4 क्वेश्चन आराम से टाइम में, 6-7 मिनट्स फॉर वन क्वेश्चन, 30 मिनट्स लगाओ। 7 मिनट्स फॉर वन क्वेश्चन, 28 मिनट्स। बाकी जो नहीं आता, जो कभी नहीं देखा ना, को छोड़ दो। आपने 10 क्वेश्चंस देखे एनईटी में, ये क्वेश्चन देखा हुआ है करो, नहीं देखा हुआ छोड़ो। दिस क्वेश्चन आई नो, आई विल ट्राई, नहीं देखा हुआ नॉट ट्राई। 4 क्वेश्चन करने हैं, 7-7 मिनट लगाओ यार। 7 मिनट में तो क्वेश्चन होना चाहिए। इतना ज्यादा टाइम, 7 मिनट कौन सा एग्जाम आपको देता है क्वेश्चन? 30 मिनट्स में करो। 5 क्वेश्चन करने हैं ना, 7 मिनट लगाओ, 35 मिनट। अब 12 क्वेश्चन करने हैं ना, 7 मिनट लगाओ। लगभग लगभग कितना हो गया? 84। अभी भी टाइम बच रहा है, टाइम बच रहा है या हो गया है? अभी भी आधा घंटा है, 20 मिनट्स आर स्टिल लेफ्ट। तो द प्रॉब्लम इज अप्रोच। और जेस्ट की अप्रोच में बड़ी जल्दी समझ, मैंने 2 बार जेस्ट क्वालिफाई किया, 87 132। जेस्ट की अप्रोच में समझ गया था। मुश्किल क्वेश्चन के आगे माथा टेक दो। इफ द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, प्रभु यू कीप इट, गॉड दिस इज फॉर यू। I will only do the questions which are related to PYQ, because JEST is going to give me those questions. I will score less marks. I will score between 30 to 45. I cannot score less than 30. वो मेरी गारंटी है. That is my talent. I will not score less than 30. And वो JEST का talent है कि JEST will not let me score more than 45. Because JEST मुश्किल क्वेश्चन भी तो डालेगा ना. Every year JEST also asks the difficult questions also. Interesting question also. कि okay, water is dripping. Draw the graph. Every student for 1 mark starts thinking for 3 minutes. Everyone I see dripping the graph. Very interesting question. Okay, it's an interesting question. It's a 1 mark question for you. Why you are thinking for 2-3 minutes on this bullshit? The answer you are not sure about. बाद में पेपर के बाद में सोचेंगे. I will only do the questions which I know कि PYQ के अंदर पूछा हुआ है, इसके अंदर ये फॉर्मूला से स्टार्ट होता है, यहाँ पे जाना होता है, इसके बाद ये जाना. परफेक्ट, डन है, लास्ट खत्म. ठीक है, मुझे तो 50% पेपर भी नहीं करना, 45 मार्क्स तक मुझे लाने मैक्सिमम मेरी. आई डोंट वांट टू इंक्रीज बियॉन्ड दैट. 45 तक इंक्रीज करने के लिए आई नीड टू पुट अ वेरी वेरी डिसेंट एफर्ट्स. मतलब मुझे पता है कि आई नीड टू कंप्लीट पीवाईक्यूज. इफ आई एम एबल टू कंप्लीट पीवाईक्यूज, स्पेशली फ्रॉम द टॉपिक्स विच आर रिपीटेड, डन है. So now comes the point where you need my help, is कि which topics are repeated.
ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं, थोड़ी बात अभी करेंगे, थोड़ी बात आई विल लेट यू नो हाउ करेंगे। सो इसके अंदर देखा जाए, सो दिस इज मैथमेटिकल फिजिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सबसे हार्ड भी, मोस्ट हार्ड एंड रिपीटेड क्वेश्चन इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अब तक जेस्ट में देयर इज नो पेपर इन विच कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन इज नॉट देयर। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन इज ऑलवेज देयर। ठीक है, लेप्लेस और फोरियर में से एनी वन क्वेश्चन दे आस्क। ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन 3 साल में एक बार, इन 3 years वन टाइम। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन फ्रॉम लास्ट 2 to 3 years एवरी ईयर देयर आस्क। पहले नहीं पूछते थे, अब लास्ट 2 से 3, 4 से 5 साल में प्रोबेबिलिटी इज कमिंग, इजी क्वेश्चन ऑन प्रोबेबिलिटी। देन सबसे इजी क्वेश्चन कम्स फ्रॉम मैट्रिसेस। तो ये जो आपको लीनियर अलजेब्रा दिख रहा है, स्कोरिंग, स्कोरिंग। तो सबसे पहले व्हाट डू वी हैव टू डू, रिवाइज मैट्रिसेस वेरी क्विकली, स्कोर वन क्वेश्चन आउट ऑफ इट। लास्ट ईयर उन्होंने आइगन वैल्यूज पूछे थे विच वाज 30 सेकंड क्वेश्चन फॉर 3 marks। अगर मैं आपको मैट्रिसेस दे दूं एंड आई आस्क यू व्हाट आर द आइगन वैल्यूज, एवरीवन नोज दैट द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज द आइगन वैल्यूज, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। और ऑप्शन के अंदर एक ही ऑप्शन था जिसके साथ ये मैच हो रहा था, 30 सेकंड्स में बिना पेन उठाए 3 marks यू वर गेटिंग, और 1 mark का क्वेश्चन और था मैट्रिसेस। तो 3 to 4 marks फ्रॉम मैट्रिसेस आर कंफर्म। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन डिफिकल्ट रहेगा, इसलिए हमें 2 दिन इसके ऊपर देने हैं। वी हैव टू डू ऑल द पीवाईक्यूज, मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं इसके ऊपर, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जेस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन एंड टीआईएफआर पीवाईक्यू क्वेश्चन। ठीक है, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो है जिसके अंदर पीवाईक्यूज डिस्कस्ड है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस बट रिपीटेड क्वेश्चंस। ठीक है, एक साल दे आर आस्क द क्वेश्चन, इसका इंटीग्रेशन करो, अनदर ईयर दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, इसका इंटीग्रेशन करो, सेम दे आर आस्किंग, सेम थ्योरी इज अप्लाइंग, दे आर अगेन एंड अगेन आस्किंग। ठीक है, ओके। देन वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, कभी पूछ लिया, कभी नहीं पूछ लिया, कभी डिफिकल्ट पूछ लिया, सो अनप्रडिक्टेबल टॉपिक लेकिन आता है। टेंसर्स कभी पढ़ना नहीं। ठीक है, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है स्पेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके बारे में हर स्टूडेंट को पता ही होना चाहिए, बिकॉज इफ यू वांट टू डू गुड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्वांटम मैकेनिक्स इन 3D, ये आपको वैसे भी आते होने चाहिए। इवन इफ द जेस्ट इज नॉट आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, दिस इज अ फाउंडेशन। तो ये फाउंडेशन के लिए कितना टाइम लगता है, 2 आवर्स। तो 2 आवर्स हर कोई इस फाउंडेशन को दे सकता है। आई विल टेल यू हाउ, कैसे पढ़ना है वो बाद में बात करते हैं। पढ़ना क्या है पहले, दैट वी विल टॉक दैट। ठीक है, वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, ओनली पीवाईक्यू। कितना पढ़ेंगे हम इसको, ओनली पीवाईक्यू, वट एवर फॉर्मुलाज आर यूज्ड इन पीवाईक्यू, ओनली दैट। मैट्रिसेस अलजेब्रा के अंदर वी विल डू ऑल द फॉर्मुलाज, ऑल द प्रॉपर्टीज, ऑल द पीवाईक्यू, जैम के भी पीवाईक्यू करेंगे। सो इसके अंदर वी विल पुट द एफर्ट, बिकॉज इसमें से काफी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ओनली पीवाईक्यू। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ दिस फलाना, नो नो नीड। स्पेशल फंक्शंस, नो नीड, जितना मर्जी पढ़ लो क्वेश्चन होगा नहीं। स्पेशल फंक्शंस की एक खास बात है, आप पढ़ते जाओ क्वेश्चन होगा। सो यू स्टडी 10 आवर्स, नो बेनिफिट, यू स्टडी 2 आवर्स, नो बेनिफिट। सो इसलिए हम पढ़ेंगे ही नहीं, क्वेश्चन आएगा हम छोड़ देंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर हम अच्छा खासा टाइम देंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बहुत सी इंटरव्यूज में भी पूछते हैं। सो दे आस्क दिस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इन मेनी इंटरव्यूज आल्सो। सो हैविंग अ वेरी गुड बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, फोरियर सीरीज जैम के लिए वी स्टडीड इट, तो अभी हम क्या करेंगे, इसके फॉर्मुलाज रिवाइज कर लेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ समवन वांट्स टू लीव फोरियर सीरीज छोड़ सकता है, लेकिन एटलीस्ट फॉर्मुलाज, क्वेश्चन नहीं करने मत करो, फॉर्मुलाज पढ़ के जाओ, फोरियर ट्रांसफॉर्म और लैप्लेस ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज पढ़कर जाओ। At least study the properties, do the PYQ. अगर कोई PYQ is you are thinking is very difficult, leave that PYQ, but at least go with the basic properties. ठीक है, उसके बाद ग्रुप थ्योरी कभी नहीं पढ़नी लाइफ में। कभी कोई बोले ग्रुप थ्योरी पढ़ लो, एटलीस्ट until unless you are a theoretical physics student, never study. प्रोबेबिलिटी थ्योरी हम अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि लास्ट कुछ सालों में वो पूछ रहा है और इजी पूछ रहा है, इसलिए करनी है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट मैथमेटिकल फिजिक्स, कैसे करनी है उसके ऊपर आते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर न्यूटन लॉस, बाबा रे बाबा 10 दिन पढ़ेंगे, न्यूटन लॉ खत्म नहीं होगा। तो न्यूटन लॉ का बेस्ट बेनिफिट क्या है, फाउंडेशन फिजिक्स का कोर्स बनाया हुआ है मैंने, फाउंडेशन फिजिक्स कोर्स इज फ्री ऑन अवर वेबसाइट। तो आप जाकर फाउंडेशन फिजिक्स में से जितना न्यूटन लॉस पढ़ाया है यू कैन स्टडी दैट, उससे ऊपर नहीं, उससे नीचे नहीं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कोई भी बच्चा बच्चा फिजिक्स का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना जानता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना जानता है, कोलिजन्स लगाना जानता है। ठीक है, तो ये सारा, ये पूरी की पूरी लाइन आई हैव कवर्ड इन फाउंडेशन फिजिक्स। तो फाउंडेशन फिजिक्स के अंदर एक एक लेक्चर में एक एक टर्म को एक्सप्लेन किया है, 1 लेक्चर ऑन न्यूटन लॉ, 1 लेक्चर ऑन कंजर्वेशन, 1 लेक्चर ऑन कोलिजन। तो आई विल रिकमेंड यू, दिस इज अ फ्री रिसोर्स, गो एंड वॉच दिस लेक्चर्स। एक दिन में आपकी ये पूरी लाइन खत्म हो जाएगी। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स,
1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन दे आस्क हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन, बेकार की चीजें नहीं पढ़नी, लेग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन, ठीक है, ऑल द पीवाईक्यूज। किस किस के पीवाईक्यूज इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द पीवाईक्यूज ऑफ जेस्ट, all the PYQs of CSIR net part B, all the PYQs if you can of TIFR। ये ऑप्शनल है, ये दोनों कंपलसरी। ये इतना करके चले जाओ, देर इज नो क्वेश्चन विच विल ट्रबल यू, ठीक है। सो PYQs ऑफ जेस्ट, PYQs ऑफ CSIR net part B ओनली, एंड TIFR के लिए इफ यू गेट अ टाइम, ठीक है। सिमेट्री एंड कंजर्वेशन लॉ भैया क्वेश्चन आएगा, हम छोड़ देंगे, दिस टॉपिक इज फॉर गॉड नॉट फॉर अस, ठीक है। सेंट्रल फोर्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सेंट्रल फोर्स को अच्छा करना है तो कौन सा एग्जाम बेस्ट है, जैम। सो जैम के पीवाईक्यूज, टीआईएफआर के पीवाईक्यूज आर बेस्ट फॉर सेंट्रल फोर्स। तो अगर आप ये 3 के पीवाईक्यूज करते हैं सेंट्रल फोर्स के लिए, केपलर्स लॉ इज इन्वॉल्व इन इट, यू आर गुड टू गो इन सेंट्रल फोर्सेस। स्मॉल ऑसिलेशंस एंड नॉर्मल मोड्स की बात करूं तो सिर्फ पीवाईक्यूज काफी हैं, और इसके अंदर एक या दो फॉर्मूलाज रहते हैं, देयर इज ओनली 1 or 2 काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कम्स सो इजी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आप पढ़ लीजिए एक बार, जैम और नेट के आप पीवाईक्यूज कर लेना सॉल्व, तो दिस विल आल्सो बी डन। क्लासिकल मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर मार्क्स स्कोरिंग इतना डिफिकल्ट नहीं है, एटलीस्ट इन जेस्ट। हाँ, इन अदर एग्जाम्स क्लासिकल मैकेनिक्स थोड़ा टफ रहता है, बट मोर और लेस इन जेस्ट इतना टफ नहीं रहता है। 10 में से 3 या 4 क्वेश्चंस यू कैन इजीली डू, 10 तो नहीं आते हैं, 7 में से 3 to 4 क्वेश्चंस यू कैन डू, ठीक है। देन कम्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज रियली चैलेंजिंग, इट इज टाइम टेकिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स दोनों में से पूछता है, ठीक है, दोनों में से इट आस्क्स द क्वेश्चन, ठीक है। सो आई वुड से स्टार्ट विद द पीवाईक्यूज, और इसके अंदर rather than studying the theory again and again, from the very first day you should think about doing the questions। पहले दिन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस इफ यू स्टार्ट डूइंग तो इट विल बी गुड। इसके अंदर आई वुड से अगर कुछ छोड़ सकते हैं, इफ यू हैव टू लीव समथिंग तो दैट विल बी डिफ्रैक्शन, ठीक। एंड अदर देन दैट आई वुड से हर एक पार्ट में से बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे गए, हर एक पार्ट में से एक एक क्वेश्चन दे हैव ऑलवेज आस्क्ड। इमेज प्रॉब्लम हो, इलेक्ट्रोसिटी, तो इसको अगर आप लेकर चले तो 10 दिन है, 10 दिन तो 30 डेज में से 10 दिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जाएंगे। तो लेकिन एक सेलेक्टिव अप्रोच भी है, उसके ऊपर बात करेंगे लेटर ऑन, बट मोर और लेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट, और छोड़ना नहीं चाहिए इसको। लेट्स से समवन सेज कि मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बहुत वीक, आई एम वेरी वीक इन दैट, तो ओनली थिंग आई रिकमेंड इज कि अगर आपको सब छोड़ना ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म छोड़ना है तो मत छोड़ो, ईएम वेव्स कर छोड़ो मत, डोंट लीव द सब्जेक्ट इंटायरली। इफ यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव, मतलब कि ऐसा कि अगर 6 क्वेश्चन आए तो 2 क्वेश्चन हो जाए वाली सिचुएशन, तो आई विल से ईएम वेव्स प्लस पोलराइजेशन। ना पोलराइजेशन की खास बात देखो, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, लास्ट 3 साल से हर साल पोलराइजेशन का क्वेश्चन। जस्ट 2024 का जब मैंने 1 मंथ कोर्स आई लॉन्च, फर्स्ट टॉपिक वी डिड वाज पोलराइजेशन, 2 क्वेश्चन आए थे लास्ट, 4 मार्क्स फर्स्ट टॉपिक, और पहले दिन में ही द स्टूडेंट सिक्योर्ड 4 मार्क्स, ठीक है। तो पोलराइजेशन लास्ट 3-4 साल से आ रहा है, वी विल नॉट लीव पोलराइजेशन, अगर आपको करना ही है तो ये 2 तो करना ही, ठीक है। उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर मैं बोलूंगा कि हाइड्रोजन एटम, ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स इन 3D से हर किसी को स्टार्ट करना चाहिए। हर साल 4 मार्क्स का ही आता है, एवरी ईयर 4 marks to 6 marks, क्वांटम मैकेनिक्स इन 3D, ठीक है। देन वेरिएशनल प्रिंसिपल, नो नीड। टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरम, नो नीड। इफ यू आर अ बीएससी स्टूडेंट, ठीक है, स्टार्ट विद क्वांटम मैकेनिक्स इन 3D, देन गो फॉर स्क्रूडिंजर इक्वेशन। स्क्रूडिंजर इक्वेशन के अंदर व्हाट डू यू से, वन डायमेंशनल वेल, हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। तो ये चीजें जो है इसके अंदर आ जाती, but I will not recommend you to start from it, but second topic should be this, first topic should be hydrogen atom and quantum mechanics in 3D, and then you can go for quantum mechanics in 1 dimension, and then in the last you can do time perturbation theory, time independent perturbation. Only these 3 things you should do. Matrix formulation of quantum theory, MSc students can do that, BSc students, if you have not done it before, maybe it is fine that you don't do it, ठीक है, क्योंकि आपके लिए कंपटीशन भी कम है, मार्क्स भी कम चाहिए,
बट क्वांटम मैकेनिक्स की वन थिंग दैट यू हैव टू बी वेरी क्लियर इज कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस. So even if you don't do the concept completely and if you only do the PYQs entirely, तब भी quantum mechanics में से you can score 4 questions because repeating बहुत है. So repeating, but the condition is the questions that you are doing in the PYQ, you should at least know the basics. कि अच्छा ये formula होता है, ये ऐसे इंटीग्रेशन करते हैं. अभी many YouTube channels और many online resources में क्या हो रहा है कि they will give you the PYQ and then they will give you the trick. For example, अगर क्वांटम मैकेनिक्स इन 3 डिमेंशन में आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर निकालना है तो दे गिव यू समथिंग लाइक दिस ए नॉट बाय एन वाली टेक्निक. आई डोंट रिमेंबर द फॉर्मूला एग्जैक्टली, बट वो दे सेज दैट ओके दिस दिस इज अ फॉर्मूला, इसको रिमेंबर. देखिए आप कर सकते हैं रिमेंबर फॉर्मूला, बट आई वुड से इफ यू आर डूइंग पीवाईक्यूज एंड इफ योर ओनली बेसिस ऑफ डूइंग द सब्जेक्ट इज पीवाईक्यूज, देन आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर वो इसी को थोड़ा सा बदल देगा. वो इसको बोलेगा अच्छा आर स्क्वायर का बताओ, ठीक है, किसी बोलेगा आर क्यूब का बताओ, बिकॉज दे वांट टू चेक इज इंटीग्रेशन कैसे करते हैं. ठीक है, दे वांट टू चेक कि यू नो कि इसके पीछे की इंटीग्रेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है. गॉसियन इंटीग्रल का यूज होता है एंड दे वांट यू टू नो द गॉसियन इंटीग्रल. गॉसियन इंटीग्रल एक ऐसा इंटीग्रल है जो जस्ट के में एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस में यूज होता है. ठीक है, जब आप पीवाईक्यू करेंगे यू विल रियलाइज. ठीक है, देन थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स. जस्ट के लिए यू कैन नॉट इग्नोर थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स से ही स्टार्ट करना है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करना है. लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली इंट्रोपी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है, कार्नोट साइकिल का बेसिक्स, पूरा नहीं कार्नोट साइकिल, बेसिक्स. ठीक है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ये 4 चीजें अगर आपने कर ली इट इज डन. मैक्सवेल रिलेशंस की कोई जरूरत नहीं है. कैनेटिक थ्योरी का हर साल क्वेश्चन आता है एंड कैनेटिक थ्योरी के लिए बेस्ट बेस्ट थिंग इज जेस्ट एंड जैम के पीवाईक्यूज. इफ यू डू यू आर गुड टू गो. ठीक है, देन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हर साल दे आर रिपीटिंग द क्वेश्चन एवरी ईयर. ठीक है, सो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर वी विल नॉट डू क्वांटम स्टैटिस्टिक्स. तो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की कोई जरूरत नहीं है, फर्मी बोसोन गैसेस की कोई जरूरत नहीं है. यू नीड क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स. सबसे पहले इसके अंदर आता है माइक्रोस्टेट्स एंड मैक्रोस्टेट्स. वो है नंबर ऑफ वेज काउंट करना, हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज आर टू अरेंज दिस अरेंज. जैम के अंदर भी इसके बहुत से क्वेश्चन आते हैं. देन माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल, देन कैनोनिकल इंसेंबल और पार्टीशन फंक्शंस, देन पैरामैग्नेटिज्म, और लास्ट के अंदर आता है आइजिंग मॉडल. अगर किसी ने ये 5 टॉपिक मेरे 5 लेक्चर्स में, 5 लेक्चर नहीं 5 जो मेरे लेक्चर्स हैं कर लिए, कोई हाँ क्वेश्चन के अंदर मैथमेटिक्स डिफिकल्ट आए तो आए, अलजेब्रा डिफिकल्ट आए तो आए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि यू डोंट नो द आइडिया. कॉन्सेप्ट नहीं पता है आपको कि क्वेश्चन कैसे करना, कॉन्सेप्ट पता ही होगा. हाँ कभी कभी ऐसा रहा है जेस्ट के अंदर कि अलजेब्रा वाज वेरी डिफिकल्ट, इंटीग्रेशन वाज वेरी डिफिकल्ट, उसकी वजह से कभी क्वेश्चन अटक जाए तो अटक जाए. लेकिन ये 5 चीजें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स 15 मार्क्स लेकर चलो. 15 नहीं तो 12 मार्क्स तो ये देगा. 12. और बहुत सिंपल है, सिर्फ लेक्चर देख लिया खत्म, कुछ भी नहीं. पीवाईक्यू किया, लेक्चर देखा, पीवाईक्यू किया, खत्म है स्टोरी. स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को 5 दिन से 6 दिन से ज्यादा लगता ही नहीं अगर कोई रोज पढ़े. ब्लैक बॉडी रेडिएशन वेरी सिंपल थिंग, पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन आता है. बेसिक थ्योरी पढ़ो रेदर देन न्यूमेरिकल. ब्लैक बॉडी रेडिएशन में थ्योरी इज मोर इंपॉर्टेंट, वो थ्योरी पूछता है. ठीक है, एंड लास्ट के अंदर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर पिछले 2 साल से पूछ रहा है, वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है. फॉर एग्जांपल होल्स वगैरह का क्वेश्चन, मोबिलिटी, ड्रिफ्ट, वेलोसिटी. मैंने सिर्फ एक लेक्चर लिया हुआ है सेमीकंडक्टर फिजिक्स का, 1.5 घंटे का लेक्चर है. सारे पीवाईक्यूज देख लो उसी में से. और इसलिए ये नहीं कि मैं बहुत तुरम खाऊं, आई एम वेरी गुड टीचर, नो, बिकॉज वो बेसिक है. एनी टीचर हु विल टीच सेमीकंडक्टर शुड टीच दैट. And my PhD was also I was doing in semiconductor, so I know what is basics. तो just is also checking the basics of semiconductor. तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन वो नहीं पूछ रहा, that is the point. अगर कोई टीचर बोले कि मेरे लेक्चर्स में से क्वेश्चन आ रहा है, it does not means that teacher is great, it means that the examiner is asking a basic questions from that subject. So that is the take away message. ठीक है, so take away message is कि semiconductor physics में से basics are, PN junction, difficult questions are coming. कुछ लोग इसमें अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं. इफ यू आर गुड इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, तो हाउ टू गेट गुड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, मैंने लेक्चर लिए हुए हैं. सबसे पहला लेक्चर है बेसिक्स ऑफ रेजिस्टर्स, बेसिक ऑफ कैपेसिटर्स. जिसने ये 2 लेक्चर देखे
उसको पोटेंशियल डिफरेंस, करंट डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन रूल्स समझ आ जाते हैं। एक बार आपको वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवीजन रूल्स यू अंडरस्टूड, देन यू कैन डू द क्वेश्चंस ऑफ पीएन जंक्शन। ठीक है, चलिए उसके बाद बात आती है डायोड्स। डायोड्स वही बात हो गई, पीएन जंक्शन एंड डायोड इज द सेम थिंग। ट्रांजिस्टर्स अगर आपने किया है तो ओके, ट्रांजिस्टर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछता है और इजी क्वेश्चन पूछता है। एलसीआर सर्किट डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन होता है। रेक्टिफायर्स नहीं पूछा है उसने, एम्पलीफायर्स रेयरली पूछा है, एक्टिव फिल्टर्स रेयरली पूछा है, ऑसिलेटर्स रेयरली पूछा है, छोड़ सकते। ठीक है, ये सब छोड़ सकते। ओपैम्प जिसने छोड़ा मर गया। डू और डाई, डू और डाई, ओपैम्प को जितना अच्छा किया जा सकता है, सभी पीवाईक्यू किए जा सके करने हैं। ठीक है, बेसिक्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फ्री के मार्क्स, फ्री के मार्क्स, गेट्स पढ़ो, बुलियन अलजेब्रा पढ़ो, 3-4 मार्क्स का पेपर करो। ठीक है, तो आई थिंक यू गेट एन आइडिया। ठीक है, अभी लेट मी बी वेरी क्लियर, last year I took live course, this year I cannot take live course. I'm not in a position to take live course because of some things going through, but I have arranged one thing for you. I have arranged one course for you which is just 500 rupees, and I'm not taking this 500 to earn money. It is just to for you, I'm giving you something, you give me something. 500 rupees course I have already launched, you can go to our website and take this course. इस कोर्स के अंदर आपको सभी के सभी टॉपिक्स का वीडियो लेक्चर्स, टॉपिक वाइज क्विज, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू, फुल टेस्ट। ठीक है, तो ऑल्दो आई कैन इवन टेक द फीस 1000, लास्ट ईयर इट वाज 1000, तो नहीं नहीं, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आई विल गिव इट इन देयर कोर्स। एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को परचेज नहीं करना है, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है। ठीक है, तो इसके अंदर यू विल गेट अ वीडियो लेक्चर्स, सभी जो मैंने टॉपिक बोले। इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 4 लेक्चर, मैग्नेटिज्म 2-3 लेक्चर, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लेक्चर्स, सभी जो जो लेक्चर्स नीडेड है। और हर लेक्चर्स के पहले खास बात है उनके पीवाईक्यू दिए हुए। सो यू सी व्हाट काइंड ऑफ पीवाईक्यूज आर कमिंग, देन यू वॉच द लेक्चर एंड देन यू एक्चुअली चेक कि पीवाईक्यू हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे। तो वीडियो लेक्चर हो जाएंगे, दैट इज द केस। तो वीडियो लेक्चर्स यू विल गेट, लगभग लगभग क्या होगा कि यू विल बी एबल टू डू, अगर रोज भी एक टॉपिक करते हैं तो 1 मंथ में 25 to 30 टॉपिक्स यू कैन डू। भगवान बन जाओगे यार इतने में, यू विल बिकम गॉड। ठीक है, तो इतने टॉपिक्स में यू विल बिकम वेरी गुड। सो रोज का एक टॉपिक का टारगेट रखोगे, 30 days यू विल कीप अ टारगेट की आई विल डू, वीक में आई विल डू 5 टॉपिक्स, हफ्ते में 5 टॉपिक, एक दिन रिवीजन एक दिन टेस्ट। ठीक है, अगले हफ्ते 5 टॉपिक, एक दिन रिवीजन एक दिन टेस्ट। 4 हफ्ते में 28 दिन में 20 टॉपिक्स विल बी डन, खत्म। कुछ चाहिए ही नहीं, और कुछ चाहिए ही नहीं। ठीक है, 5 दिन लेक्चर्स देखे, एक दिन और लेक्चर्स के साथ पीवाईक्यू किए, एक दिन टेस्ट दिया, टॉपिक वाइज टेस्ट दिया, 7 डे यू है जो रिवीजन किया। ठीक है, लाइव इंटरेक्शन बीच बीच में आई विल कम, बट राइट नाउ आई एम इन सम सिचुएशन सो आई कैन नॉट हैव लाइव क्लासेस एज मच, बट रिकॉर्डिंग के अंदर इट इज अवेलेबल, इवन पीवाईक्यूज आर डिस्कस्ड। तो टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज आर देयर। तो आपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लेक्चर्स देखे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टॉपिक वाइज पीवाईक्यू मिल गया, इट इज कम्प्लीटली सॉल्व, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं तो उसकी असाइनमेंट भी आपको मिल गई, वो भी कंप्लीटली सॉल्व है। 10 से 20 क्वेश्चन है हर टॉपिक के लिए, उतना ही कर लिया, इट इज इनफ। आपको फिर सीएसआईआर नेट और अदर एग्जाम्स के पीवाईक्यू करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज असाइनमेंट विल कवर इट। एंड देन अल्टीमेटली इन द एंड यू विल हैव 2 to 3 फुल टेस्ट। 2 तो कंफर्म है, 2 आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड, थर्ड आई विल सी इफ नीडेड। तो 2 फुल टेस्ट आप देंगे, 2 फुल टेस्ट देंगे एकदम जेस्ट के जैसे फुल टेस्ट है। फीस विल बी ओनली 500, यू कैन एनरोल इन द कोर्स। ठीक है, अदर बिकॉज फ्रॉम लास्ट 10-20 days I was in something, students were messaging me to open the course just like last year we had. So उन्हीं के juniors जो है, they were coming to me and asking me to launch the course. I was not in a position to launch it, but luckily now I have made it everything and now you can enjoy it. Now I am open for your questions. कोई भी questions you have to ask, please go ahead. ठीक है, 30 days का टारगेट यही है कि आई हैव पुट द टॉपिक्स इन अ सीक्वेंस, यू कैन डू द टॉपिक्स इन अ सीक्वेंस। तो एक सीक्वेंस के अंदर आई हैव पुट 30 टॉपिक्स। ऐसा नहीं है कि मैंने सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स नहीं पुट किए हैं कोर्स के अंदर। कोर्स के अंदर आई हैव पुट द टॉपिक्स सीक्वेंस वाइज, कि पहले ये करना चाहिए, फिर ये करना चाहिए, फिर ये करना चाहिए।
वैलिडिटी ऑफ 500 कोर्सेज जब तक आपका जेस्ट का एग्जाम नहीं होगा, तो टिल योर जेस्ट एग्जाम इज नॉट डन कोर्स ओपन रहेगा, ठीक है। और मैं यूजुअली कोर्स को जल्दी क्लोज नहीं करता। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जाम इज एंड ऑफ मई, एंड ऑफ मई, ठीक है, सर मेरी मुझे जो लगता है। यस सर